arithmetic mean x bar is equal to summation of fx upon summation of f or 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 arithmetic mean arithmetic mean x bar is equal to summation of fx अपॉन कैपिटल एन। अब ये फॉर्मूलास बेटा यहाँ पे देखने के बाद मुझे पता है तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा बेटा। अब यहाँ पे तो हर कोई स्टूडेंट बेटा ये सोचता होगा कि सर दिस फॉर्मूला इज एग्जैक्टली वन और द सेम जो आपने अभी अभी हम लोग को अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ाया था। सब लोग यही सोच रहा था, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। सब लोग यही सोच रहा था मैडम। यस बराबर है, जो तुम लोग सोच रहे हो राइट है मैडम, बराबर है कि फॉर्मूला इज एग्जैक्टली द सेम। बट ये फॉर्मूला जो है मैडम वो सिर्फ दिखने में सेम है मैडम। ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ दिखने में सेम है बेटा, प्रैक्टिकली सेम नहीं है, प्रैक्टिकली सेम नहीं है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट कि प्रैक्टिकली सेम नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो मैंने टर्म्स यूज किए बेटा उसके जो मीनिंग्स है बेटा, मीनिंग्स, ये मीनिंग्स बेटा डिफरेंट हो गए यहाँ पे। मीनिंग्स बेटा यहाँ पे डिफरेंट हो गए सब। ये देखो बेटा यहाँ पे when you will start beta with the meaning, you can write down this as bro, hey bro, where x is the, where x is the हा 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 x बोला, x बोला, x बोला, where x is the variate, where x is a variate। और ये मीनिंग मैंने तुम लोग को बड़ा x का मीनिंग वेरिएट किसमें पढ़ाया था बोलो? विद रिस्पेक्ट टू अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी, राइट? यही मैंने बोला था x इज अ वेरिएट। अब विद रिस्पेक्ट टू बड़ा ग्रुप डेटा, सुनो, रिस्पेक्ट टू ग्रुप डेटा x is a mid, x is the midpoint, or it is a class mark, or it is a mid value। बेटा पहले वाले फॉर्मूला में x वेरिएट था बेटा, पहले वाले फॉर्मूला में अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी में। बट अब x, अब जो है बेटा x इज अ मिड पॉइंट, मिड वैल्यू,
और इट इज अ क्लास मार्क। जो बोलना है बोलना है, जो बोलना है बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल एग्जैक्टली वन और द सेम। इट इज ऑल वन और द सेम। बड़ा मुझे फटाफट बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मिड पॉइंट? मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला बताओ मुझे फटाफट। वेरी गुड भाविका, वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड रितेश, परफेक्ट बेटा। उत्कर्ष, हरीश, ऋषभ, अभिशंकर, वेरी गुड मैडम। चलो वेरी गुड बेटा, करेक्ट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा मुझे यहाँ पे डाउट है कि तुम लोग यहाँ पे बेटा हर एक क्लास इंटरवल का बेटा मिड पॉइंट फाइंड करेगा? हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करेगा तुम लोग? हम लोग सिर्फ बेटा फर्स्ट, नहीं बेटा, क्रिस, क्रिस लोपेज, हम लोग बड़ा हर एक का फाइंड नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बड़ा फर्स्ट क्लास इंटरवल का फाइंड करेंगे बेटा। और एक बार पता चल गया बेटा कि जो क्लास इंटरवल जो है उसका विड्थ क्या है बेटा, विड्थ विड्थ विड्थ, या फिर साइज या फिर लेंथ, वही विड्थ को बेटा हम लोग ऐड करते रहेंगे बेटा। एग्जाम में हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। एग्जाम में हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है बेटा। चल नेक्स्ट। एफ इज is the frequency bro. F is the frequency bro. एंड फिर उसके बाद बड़ा कैपिटल एन इज अ कैपिटल एन बड़ा is the total of frequency bro. Capital N bड़ा is the total of frequency bro. चलो मुझे बताओ बड़ा कि for solving with such type of sums bड़ा, what kind of information do you expect? ये टाइप का बड़ा सम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में से बेटा तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्वेश्चन में थोड़ी ना सब दिया जाएगा बेटा। क्वेश्चन में, इन द गिवन क्वेश्चन मैडम, करेक्ट, यू कैन एक्सपेक्ट बट ओनली टू थिंग्स। ये देखो यहाँ पे मैडम, one is the beta class interval and second is the beta frequency. One is the class interval and second is the frequency. और यहाँ पे अब मुझे डाउट है मैडम कि चलो सम सोल्व करने के टाइम अगर तुम्हें ये गिवन ग्रुप डेटा कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा मिला तो इट इज वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो, मान लो कि बड़ा गिवन डेटा इज अ डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा, so by keeping that given discrete data as it is, are you going to solve the sum?
अच्छा नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे बेटा तुम लोग उसे? Yes, you will convert it into continuous, right? By subtracting beta 0.5 from the lower limit and by adding beta 0.5 to upper limit. यही करोगे ना बेटा तुम लोग? Yes, very good, Hiten. Yes, तुम लोग जो बोल रहे हो बेटा राइट है, रॉन्ग नहीं है बेटा. तुम लोग ने रॉन्ग नहीं बोला है मुझे. बट ये करके तुम लोग ने बेटा एग्जाम में अपना टाइम जो है बेटा वेस्ट किया है, वेस्ट. You have wasted your beta valuable time in your exam. ये करने की कोई जरूरत ही नहीं थी बेटा, क्योंकि मीन जो है बेटा. यस, करेक्ट एंजेलिना, वेरी गुड. अब तुम लोग को पता चला बेटा कि मिड पॉइंट विल रिमेन बेटा वन और द सेम. अब याद करो बेटा, जिस किसी भले इंसान ने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था बेटा, उसने तुम लोग को बड़ा मिड पॉइंट वाला टर्म पढ़ाया था. और वही एक सिंपल सा मिड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा वो भले इंसान ने बड़ा एक नहीं, दो नहीं बड़ा तीन तीन एग्जांपल्स लिए थे. एक कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा, सेकंड यस discrete data, and third discrete data which is converted into continuous data. वहां पे जब मैंने ये तीन एग्जांपल्स पढ़ाए थे बड़ा, तब मैंने बार बार वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोला था बड़ा कि when you try to find the midpoint of a discrete data or a discrete data which is converted into a continuous data, midpoint remains but one or the same. Midpoint but remains one or the same. इसलिए बेटा तुम्हें यहाँ पे एग्जाम में बेटा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा. समझा बेटा सबको? एंड अभी शंकर, नाउ बी केयरफुल बेटा. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे ऊपर ही आने वाला है. चलो. एंड नाउ फॉर सॉल्विंग बेटा विद सच टाइप ऑफ सम, बेटा यू विल रिक्वायर अ टेबल. चलो, will require the table. अभिशंकर डर मत. अभिशंकर, चलो बेटा, सब लोग रेडी बेटा? डर क्या लगता है? फॉर सॉल्विंग बेटा विद सच टाइप ऑफ सम, बाय इन द टेबल बेटा, ये देख. फर्स्ट कॉलम बेटा, it will be the class interval. Second column बेटा, it will be the frequency. बेटा ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में से ही मिलेगा. थर्ड कॉलम बेटा x. बेटा x means it is a midpoint, mid value, class mark, and the fourth column beta will be fx. Once the table gets over, you will have to find the total of beta frequency and the total of beta fx. ये दोनों का बड़ा टोटल ले और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला में जाके उसको सब्स्टिट्यूट कर दे. You'll get your answer, madam. You will get your required answer, madam. चलो बेटा रेडी हो? Formula with respect to beta group data also gets over.
चलो नेक्स्ट बड़ा वी हैव स्टडीड दैट के पढ़ाई के लिए अरिथमेटिक मीन मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी के arithmetic mean is the average which can undergo for the further mathematical treatment which can undergo for the further mathematical treatment तो मैंने क्या बताया था मैडम कि विद रिस्पेक्ट टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट फॉर द फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मैडम what we can study with respect to the arithmetic mean. Very good, Ritesh. We can study about combined mean and weighted mean. We can study about combined mean and weighted mean. Our next heading will be our next heading will be combined mean. Our next heading will be combined mean. And now, when we are going to start with this term, which has been called to be as combined mean, यहाँ पे दिमाग कहीं ना कहीं सोचेगा तो जरूर कि सर सिंस we are going to study about this combined mean, so sir we want to know कि what is combined mean, under what condition we can make the use of this combined mean, है ना, what is the formula for combined mean, etc etc etc। बट ऐसे बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि नहीं आएंगे सब, है कि नहीं? तो in order to know in order to know the answer of such type of questions, see here I will start with the basic things कि combined mean it can be used combined mean it can be used only when in the given sum only when in the given sum there are at least two groups. There are at least two groups. There are at least two groups. Two groups means there should be minimum two groups जिसमें टू चलेगा नहीं तो टू से ज्यादा भी चलेगा बट टू से कम नहीं चलेगा टू से कम नहीं चलेगा minimum there has to be two groups and with respect to two groups if I know the number of observations of two groups and if I know the mean of the two groups so in that case I can make the use of combined mean in that case I can make the use of combined mean
Say for example, in a class, there is a group of boys and girls. In a class, there is a group of boys and girls. I know in a class what are the number of boys are and what are the number of girls are. Apart from that, I also know what is the average weight of a boy is and what is the average weight of the girl is. And now, if I want to find a single weight of all the boys and girls which are being taken together, together. So in that case, I can make the use of combined mean. I can make the use of the combined mean. तो इमीडिएटली बट देयर कम्स अगेन अ डाउट आस्किंग अ क्वेश्चन कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कंबाइन मीन यूज होगा. इट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि देयर वर टू ग्रुप्स. वन, इट वाज अ ग्रुप ऑफ बॉयज and second it was a group of girls, and because of which in order to answer this question we have used the fundamentals of combined mean. ये था बड़ा एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 2, कैसे in a factory there are three types of workers. One is a skilled, other one is a semi skilled, and third one is a bit unskilled. I know what are the number of skilled laborers are, what are the number of semi skilled laborers are, and what are the number of unskilled laborers are. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? I know what is the average salary of skilled worker is, what is the average salary of semi skilled worker is, and what is the average salary of unskilled worker is. And now my aim is to find a single value. My aim is to find a single value, that is a single salary for all the workers which are being taken together. So answer to that question, it can be obtained by using a combined mean. And immediately again there can be the doubt कि सर आपको कैसे पता चला? Because in this sum there were total three groups. One was a group of skilled, second it was a group of semi skilled, and third it was a group of unskilled. ये पार्ट समझा सब लोग को? ये समझा सब लोग को? And now after this, next line, by leaving two fingers space, start writing. Write down by leaving two fingers space. If N1 and N2 are the number of observations. N1 and N2 are the number of observations of the first group and the second group respectively. N1 and N2 are the number of observations of the first group and second group respectively. And x1 bar
and x2 bar are their respected means. X1 bar and x2 bar are their respected means. Then combined mean. Then the combined mean is given by then the combined mean is given by the formula is x bar to the base with a 1 2 x bar to the base 1 2 is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar whole upon n1 plus n2. The meaning of n1 n2 x1 bar x2 bar it remains same जो मैंने अभी तुम लोग के साथ बेटा थियरी में डिस्कस किया था. n1 it is a number of observation of first group, n2 it is the number of observation of the second group, x1 bar it is the mean of the first group, x2 bar is the mean of the second group. And रही बात x bar to the base 1 2 की so you can write down next line where x bar to the base 1 2 is equal to the meaning of that is it is the combined mean of the two series combined mean of the two series which are being taken together next time write down similarly the combined mean of the three series is given by x bar to the base with a 1 2 3 which is equal to formula will remain same but ये थोड़ा सा extend हो जाएगा n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar upon whole upon n1 plus n2 plus n3 whole upon n1 plus n2 plus n3 meanings will remain same. Only you should write down where x bar to the base 1 2 3 x bar to the base 1 2 3
which is equal to combined mean of the three series. Combined mean of the three series which are been taken together. Which are been taken together. Similarly, the formula can be used even for the 4 groups, 5 groups, 6 groups, and so on. समझ में आया सकोड़? Combined mean, it can also be represented by using x bar to the base c, where the letter c it represents combined. Letter c it represents combined. चलो आज जो पढ़ा है सबको समझा? बड़ा आज जो मैंने एक्सप्लेन किया समझा सब लोग कोड? फटाफट मैसेज करो मैडम। और फिर से बड़ा एक बार रिमाइंडर मैडम। हाँ प्रिया बोलो। प्रिया बोलो बेटा क्या डाउट है? तुम लोग को बेटा जो एप्लीकेशन क्लास में से जो दिया है मैडम उसको अपडेट करना है मैडम। बेटा मिड पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस डेटा एंड हाँ वो बराबर है, वो कभी सेम नहीं होता है बेटा। बट जब डिस्क्रीट डेटा को प्रिया डिस्क्रीट डेटा को जब हम लोग बेटा कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मिड पॉइंट बेटा हमेशा सेम रहता है प्रिया। तो अगर क्वेश्चन बेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है और इसको तुम लोग ने कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया बेटा तो वहां पे मिड पॉइंट वही रहेगा बेटा। नहीं प्रिया कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मिड पॉइंट वही रहेगा बेटा। मिड पॉइंट विल रिमेन सेम डिस्क्रीट को जब कंटिन्यूस करोगे बेटा। डिस्क्रीट डेटा जो ओरिजिनल फॉर्म में है बेटा, ये देख एग्जांपल दे रहा हूं। 10 to 19, 20 to 29 बराबर बेटा। प्रिया ये डिस्क्रीट फॉर्म में पहले का बेटा जो मिड पॉइंट आएगा वो 14.5 आएगा और दूसरे का मिड पॉइंट बेटा 24.5 आएगा। बट यही डेटा को जब तू बेटा कन्वर्ट करेगी कंटिन्यूस फॉर्म में बेटा तो ये बेटा हो जाएगा 9.5 टू 19.5 और 19.5 टू 29.5। प्रिया इसका एक बार फिर से मिड पॉइंट फाइंड करके देखो। दोनों केस में मिड पॉइंट तुझे सेम ही आएगा, इसका 14.5 होगा और दूसरे का 24.5 होगा। चेक करके देख प्रिया, चेक करके देख। बेटा सब लोग अपना ऐप डाउनलोड करना, अरे अपग्रेड कर लेना बेटा। और इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो राहुल सर या फिर विकास सर के साथ ये करना बेटा, कांटेक्ट करना, ठीक है? तो मैं आगे के जितने भी अपडेट्स है बेटा वो ऐप में आएंगे सब। चलो बेटा विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, स्टे होम बेटा, स्टे सेफ, बाय ऑल ऑफ यू।